Very good morning, students. Today we'll be dealing with the transfer to an unborn person. The transfer to an unborn person under section 13 of a Transfer of Property Act Part 2. Now students, let us see whether we can transfer to an unborn person a property under section 13 of Transfer of Property Act and whether there are any corresponding provisions under the other law. Student, in our last lecture, we have seen that yes, under section 13, we can transfer the property to an unborn person. Now, before we go further, it is important for us to know what do we mean by the term unborn person. Unborn person means a person who is not in existence even in the mother's womb. A child in the mother's womb is considered to be a competent transferee, and therefore Section 13 is an exception to the general rule. What does general rule says? A person can transfer his property to a transferee provided the transferee should be in existence at the time of the transfer. Here, by virtue of section 13, we are transferring a property which is transferred to an unborn person under section 13, and an unborn person means a person who is not yet conceived in the mother's womb. Now, the corresponding provision we have seen under section 13 of under section 113 of Indian Succession Act 1925. Here, by virtue of this particular section, we can actually transfer the property to an unborn person when he is not in existence at the date of the death of the testator. Let us see what the provision says. Where a bequest is made to a person not in existence at the time of the testator's death, subject to the prior bequest contained in the will, the later bequest shall be valid unless it comprises the whole of the remaining interest of the thing bequeathed या bequeath. That is to say, जब कभी भी हम ट्रांसफर करते हैं किसी भी पर्सन के फेवर में, ऐसा पर्सन जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है टेस्टेटर्स की डेथ के वक्त में, देन इन दैट केस हम क्या करते हैं, ऐसा करते वक्त में हम एक प्रायर बिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और उसमें हम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके वो बिक्वेस्ट अंडर द केयर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट दे देते हैं। इस बात का मेंशन हम विल में भी करते हैं। तो जब टेस्टेटर की डेथ होती है, तो जब विल एग्जीक्यूशन वाली बात आती है, तब जो लेटर बिक्वेस्ट हमने किया है वो वैलिड कहलाया जाएगा, प्रोवाइडेड हम क्या करने वाले, हमें क्या करना है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही बिक्वेट करना है। बिकॉज हमने ये चीज पढ़ी थी सेक्शन 13 में कि जब कभी भी हम अनबॉर्न पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो हमको पूरा का पूरा राइट जो है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी में वो ट्रांसफर करना पड़ता है, तभी जाके वो ट्रांजेक्शन वैलिड कहलाया जाता है। अगर हम प्रोविजन देखें इंग्लिश लॉ की, तो बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ इंग्लिश लॉ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 एंड आफ्टर द इनेक्टमेंट हमको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो देखिए बिफोर इनेक्टमेंट क्या प्रोविजन था। अ ट्रांसफर इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन वाज गवर्न्ड बाय द रूल इन वीटबाय वर्सेस मिशेल। इसमें बेसिकली प्रोविजन ऐसा था कि हम अनबॉर्न पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी जो भी गवर्न करते थे वो बेसिकली इस केस में जो जजमेंट आया उसके आधार पर बेसिकली गवर्न होती थी। नेक्स्ट इज द रूल इज ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटीज, इसे हम रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। एंड साथ ही साथ इफ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज गिवन टू एन अनबॉर्न पर्सन, अगर हम बेसिकली इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को देते हैं और कुछ जो भी बची हुई प्रॉपर्टी है यदि हम उसके इशू को देंगे, देन इन दैट केस वो जो इशू को हमने दिया हुआ है प्रॉपर्टी, उसके आने वाले बच्चों को जो हमने प्रॉपर्टी दी हुई है, दैट वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ वॉइड वन टुगेदर विद ऑल द अदर सब्सिक्वेंट लिमिटेशन। उसके ऊपर जो भी सब्सिक्वेंट लिमिटेशन रहेगी उसके आधार पर हम उसको क्या मानेंगे, वॉइड मानेंगे। नेक्स्ट इज
आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ द इंग्लिश लॉ के इनेक्टमेंट के बाद में क्या हुआ? इनेक्टमेंट के बाद में ऑफ द एक्ट 1925 ऐसा बोला गया कि ये जो रूल है दैट इज नॉट एक्चुअली applicable in the present scenario and hence this particular rule got abolished. And second is जो भी ट्रांसफर इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन किया गया वो गवर्न होगा अब बाय रूल अगेंस्ट परपेचुटी, यानी रूल अगेंस्ट कंटिन्यूटी से वो गवर्न होगा. दैट इज व्हाट वी हैव observed after the enactment of English law of Property Act 1925. Is there any similar provision under Hindu law and the Muslim law? So earlier a gift or a bequest in favor of an unborn child was void, but after the Transfer of Property Act 1882, we found that such bequests are covered under Section 13 of Transfer of Property Act and hence would be termed to be a valid one. Earlier कैसा था? गिफ्ट या bequest जो भी हम अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पे करते थे वो void माना जाता था क्योंकि चाइल्ड एग्जिस्टेंस में नहीं था. लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आने के बाद में जो अनबॉर्न पर्सन जो कि अभी तक एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, मदर्स वोम में भी नहीं है, कंसीव भी नहीं है, उसको भी कॉम्पिटेंट ट्रांसफर ही माना गया और ऐसा बोला गया कि हम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके ऐसे किसी अनबॉर्न पर्सन के नाम पे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं. Therefore, Section 13 of the Transfer of Property Act is an exception to the general rule, and hence it would be considered to be a valid transfer. That is to say, whatever the property is transferred, taking into consideration the provision of Section 13 in favor to an unborn person, if the particular property has been transferred or is bequested with the absolute interest in it in favor of an unborn person and the property is for the benefit of an unborn person, then in that case such type of a transaction would be termed to be a valid one. So thank you student. Today I wish you have understood the lecture, and if you have any of the query you can let me know. Till the time, have a nice day. Goodbye.